Hello everyone, myself Deepak Gupta, and in this session we will take up the topic clubbing of income, which will be covered under section 60, section 61, and various subsections of section 64 of the Income Tax Act 1961. This topic, commonly known as clubbing of income, actually denotes that when income of other persons, कुछ और लोगों की इनकम को जब हम असेसी की इनकम में जोड़ देते हैं तो क्या लिखा इनकम ऑफ अदर पर्सन्स विच इज टू बी इंक्लूडेड और टू बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द असेसी। यानी कि जो आपका असेसी है जिसकी आप इनकम कैलकुलेट कर रहे हो, अगर उसकी इनकम में कुछ और लोगों की इनकम को जोड़ दिया जाए तो वो किस किस सर्कमस्टांस में होगा, वो सेक्शन 60, सेक्शन 61, सेक्शन 64 के तीन चार सब सेक्शन, तो कुल मिला के ये 6 केसेस हैं। और इन 6 केसेस के अंदर वी कैन इजीली से कि किसी और की इनकम को आपकी इनकम में जोड़ दिया जाए। व्हाट द पॉइंट इज ऑल अबाउट that normally individuals in this country are the or should be the least tax paying entities, and therefore they are provided benefits. And one of the benefits, these benefits can be in the form of exemptions and deductions, and one of the primary benefits which is provided to almost all individuals is in the form of maximum exemption limit, which is commonly known as MEL. And if we ignore the age criterion at the moment, then this amount is approximately, or sorry, exactly 2,50,000. For senior citizens, that is who have achieved the age of 60 years during the previous year under consideration, but are less than 80 years, this amount has been enhanced to rupees 3 lakhs. And those who are super senior citizens, that is who have achieved the minimum age of 80 years during the previous year under consideration, this figure has been enhanced to 5 lakhs. So it denotes that if your total income for the financial year or previous year does not exceed this maximum consumption limit, then you are not liable to pay any tax. So if myself being a person of age, let's say less than 60, and I have an income of 3 lakhs, then out of the income of 3 lakh, 2,50,000 will not be taxed, and therefore I will be paying tax only on this balance amount of 50,000 subject to the rate applicable. But if my age is minimum 60 or above, then I am covered by these two exemption limits and I will not be paying any tax. Also, the tax on such individuals is on slab rate basis. So in your earlier income, that is first part of your income will be taxed at a rate of 10%, which has been reduced to 5% with the last 2 years. Second slab is the same as last time, as before amendment, 20% and 30%. So the slabs which were in consecution to 10, 20, 30 has been reduced to 5%, 20%, and 30%. It means if I took the case of 3 lakh and the person is aged less than 60 and the amount was total income is 3 lakh, then out of 3 lakhs, 2,50,000 is the exemption limit which will not be taxed, and the balance amount of 50,000 will be taxed at the rate of 5%, and the tax will be only 2,500 subject to any education cess and surcharges. Now, these individuals are also given various exemptions and deductions. So people, or I should say many people in this country, either intentionally or unintentionally, I don't want to stress on that because we are not going into the criterion of tax planning or tax avoidance or tax evasion. But some people, irrespective of the fact whether it was done intentionally or intentionally, there is a transfer of their income. There is a dilution of their income. Not just that they are reducing their taxable income, but it may happen that they are streaming their income into various hands which they feel that they are known to him. For example, for example, if Mr. X has this minor son Y, and X
is having a total income of say rupees 5 lakhs, then X will be paying tax on the excess amount of 2,50,000 at the rate 5%, and he will be paying a tax of 12,500. But if somehow he dilutes his income 50% in the hands of his minor son, and in this case, that if he generates 2,50,000 in his own name and 2,50,000 in the name of his son, which can be done by transferring some of the assets which are generating income into the hands of the minor son, then they both can have separate income of 2,50,000 each, and in both the cases the taxes will be nil. So there can be bifurcation, trifurcation of a person's income into different individuals' hands, which are quite known to him, and in this way they can claim multiple benefits of the maximum exemption limit and slab rates, and also other exemptions and deductions, leading to a stage where instead of calling it tax evasion, we had to call it tax avoidance, and they are able to bypass the provisions of the law. And therefore, to stop such bylaws, these sections 60, 61, and 64 have been created, where, or we should say that they are a kind of inhibitory measures which try to stop such bifurcations of income, and so that we can avoid such practice of tax avoidance. Because if there is any transfer of income in a violation of these sections, then there will be provisions of penalty and prosecution. So you should study this topic, or these sections, as the prohibitory measures, as they should act that there is no undue benefit of exemption limits and the tax slabs availed by an SSC by transferring his personal income into the hands of his certain known relatives. So first of all, the basic difference has to be that section 60 and section 61, they are related to non-relative. And when we will talk of section 64, then they will relate to the relatives, that are minor son, that is son's wife and your spouse. So first of all, section 60. So section 60 says that if there is a SSC Mr. X and there is another person that is Mr. Y, and Mr. X owns an asset, and such asset generate any kind of income. So when the asset is owned by Mr. X, therefore income from such asset will also be taxable in the hands of the SSC, that is Mr. X. But if somehow X has not transferred the asset to Mr. Y, तो एक्स ने वाई को ये असट ट्रांसफर नहीं किया, सिंपल भाषा में एक्स के पास मकान है, उस मकान की रेंटल इनकम आ रही। अब अगर एक्स ने वाई को वो मकान बेच दिया, तो जब मकान का ओनर एक्स से वाई बन गया, तो उसकी जो रेंटल इनकम है वो भी वाई के नाम पे टैक्सेबल होगी। बट यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि एक्स ने वाई को असट ट्रांसफर नहीं किया, बट उस असट से होने वाली इनकम ट्रांसफर कर दी। यानी कि एक्स ने वाई को मकान नहीं दिया, वाई तो मकान के, वाई तो एक्स के नाम ही है, सॉरी, एक्स ने वाई को मकान ट्रांसफर नहीं करा, मकान तो एक्स के नाम पर ही है, लेकिन उसकी रेंटल इनकम को एक्स ने कहा कि भाई वाई आप रख लो। तो मान लो एक्स और वाई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, और एक्स ने अपनी सिस्टर से कहा कि भाई मेरे इस मकान का किराया आपका, आपकी फाइनेंशियल हालत कमजोर है, आप रेंट इनकम से अपनी लाइफ जी लो। तो सिस्टर कहती है भैया मकान भी दे दो। X says, no, Makan is with me. I will give if you need it to do. But this house is not for you to sell. This house is only for you to generate the rental income so that you can live happily. So therefore, X kept the ownership of the house with himself, but just transferred its rental income in the hands of the Y. So irrespective of the fact that whether these X and Y are related or not, now ownership of the asset is with X, income is being received by Mr. Y. So Act says that
income will belong to the person who owns the house, and therefore such income received by Y on such untransferred asset will be deemed to be the income of Mr. X, that is, it will be clubbed in the hands of Mr. X, that is, Mr. X will have to pay tax on such income. तो सिंपल भाषा में अगर एक्स ने अपने भाई के नाम अपनी सिस्टर के नाम मकान ट्रांसफर नहीं करा लेकिन उस मकान की रेंटल इनकम ट्रांसफर करी तो इनकम वाई एंजॉय करेगी लेकिन उसका टैक्स एक्स पे करेगा irrespective ऑफ द फैक्ट कि एक्स और वाई आपस में रिलेशन में है या नहीं. That is what section 60 is all about. And now I hope this is clear. And why I have put this section 61 in comparison to section 60 is that on the similar lines of section 60, if I again carry forward similar example that there is X and there is Y, X owns an asset and such asset generates a kind of income. And what is happening here? That irrespective of the fact that whether X or Y is related or not, X has made a transfer of ownership, but this transfer of ownership is irrevocable. This revocable transfer says that whenever X wants, he can take the asset back. And after making such revocable transfer, this income is also transferred in the hands of Y. And now the income is received by Y due to such transfer, though it is revocable. The Act believes that such activity may be a step to avoid the section 60 provisions, and therefore where section 60 is said that because there was no transfer there will not be any transfer of income and hence the income will be clubbed. So therefore this transfer is maybe just a step to avoid that provision of section 16. The act says that revocable transfer is actually no transfer because it can always be taken back by Mr. X. So act says only if X has made non-revocable transfer to Y, only in those cases the income will not be clubbed and Y will be liable to pay tax. But if either there is no transfer or the transfer is revocable, then in both the cases, first in the case of section 60, second in the case of section 61, whatever income is received by such transferee will be clubbed in the hands of the transfer. So we say that in both the cases, the income received by transferee will be clubbed, will be added in the hands of transfer. And that is what section 60 and section 61 implies. Now, moving forward with the provisions of section 64. So section 64 will have various subsections and they will primarily deal with the wife, and instead of the word wife we want to use the word spouse because it is not just from husband to wife, it can be from wife to husband also. Second, it could have been the son's wife, and here it is only wife because son will have only wife legally. And in third cases, it is the minor child.
So minor child, which is easy section, it says that ideally minor don't have any legal existence, and therefore Act says that if there is Mr. X and it has his minor child, irrespective of the fact whether it is a girl or a boy, until and unless such minor child is a girl and has been married. Because in that case, the X, that is a clubbing, will be done in the hands of the husband, if that is major. So ideally, whatever income is earned by such minor child will be clubbed in the hands, will be clubbed in the hands of the parent and one of the parents. It has to be either parent, it has to be either mother or the father. So if they are divorced, then it will be in the hands of that parent which has the custody of the minor child. And if they are not divorced, then it will be in the hands of that parent which has higher taxable income, which has higher taxable income, which has higher income. So any income of the minor child will be clubbed in the hands of either the mother or the father, depending upon that if they are undivorced, then income will be clubbed in the hands of that parent which has higher income. And if they are divorced, then income will be clubbed in the hands of the parent which has the custody of the child, subjected to two provisions, that there will be a exemption of rupees 1500 per annum per minor child. So if the income of the minor child is up to rupees 1500, then there will not be any clubbing. And if the income is more than 1500, then 1500 will be made exempt. तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर माइनर चाइल्ड की इनकम 1000 रुपये है, लेस देन 1500 रुपये है, तो ये फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगी. और अगर हम ये कहें कि बच्चे की इनकम जो है वो लेस से 8000 रुपये है, विच इज मोर देन 1500, तो इस केस में 8000 में से 1500 रुपये माइनस हो जाएंगे और 6500 जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा. सेकंड प्रोविजन क्या है कि नॉर्मली बच्चों की इनकम पेरेंट्स के असेट्स के कारण हो, बट अगर ये इनकम किसी फिजिकल स्किल से जनरेट हुई है ना, इनकम हैज बीन जनरेटेड फ्रॉम फिजिकल स्किल्स ऑफ माइनर चाइल्ड, तो वी बिलीव कि भाई ये कोई ऐसी एक्टिविटी है जो बच्चे की पर्सनल है, जैसे बच्चा कोई गेम खेल रहा है, बच्चा मूवी में एक्टिंग कर रहा है, कोई मॉडलिंग कर रहा है, इन दैट केस there will not be any clubbing of income. In that case, there will not be any clubbing of income. No clubbing of income, because that will be taxable in the hands of such minor child only. Such minor child only. Now we will take up the case of the spouse. So ideally, in the case of spouse, that is section 64 1 4 64 1 6 and 64 1 8. So there are normally three circumstances here. The first says that there is an organization, so there is an entity, and Mr. X and Mrs. X, they both are substantially interested in this entity. They both are substantially interested in such entity. Substantially interested का मतलब क्या है कि दोनों हस्बैंड वाइफ का मिनिमम 20% ओनरशिप, 20% ओनरशिप इन दिस एंटिटी.
तो अगर एक बिजनेस में, एक फर्म में, एक कंपनी में एक्स और उनकी वाइफ या वाइफ और उनके हस्बैंड दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और यहाँ से एक स्पाउस को कोई रेमुनरेशन मिल रहा है, तो हम दो बातें लेके चलते हैं। या तो एक्स और मिसेज एक्स दोनों सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड होंगे, और जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है आइदर वन ऑफ द स्पाउस और बोथ ऑफ द स्पाउस। यानी कि हो सकता है कि एक्स और मिसेज एक्स में से सिर्फ एक्स का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो, या सिर्फ मिसेज एक्स का हो, या दोनों का हो। तो अगर ये एक का है तो एनी रेमुनरेशन received by such not interested employee, not interested spouse will be clubbed in the hands of the substantially interested spouse। यानी कि अगर हस्बैंड वाइफ में से एक का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, अगर उसको किसी भी तरह की सैलरी रेमुनरेशन उस एंटिटी से मिलेगी, तो वो सारी के सारे रेमुनरेशन वी विल प्रेज्यूम कि जिस स्पाउस का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है वो अपनी सैलरी खुद ड्रॉ करने की जगह अपने स्पाउस का नाम ट्रांसफर कर रहा है। इसलिए अगर किसी एंटिटी में एक स्पाउस का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और उस एंटिटी से उसके स्पाउस को जो सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड नहीं है किसी भी तरह की रेमुनरेशन मिल रही है, तो ये रेमुनरेशन उस सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड स्पाउस की टैक्सेबल इनकम में क्लब हो जाएगा, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि वो जो रेमुनरेशन मिला है ये उसकी फिजिकल या क्वालिफिकेशन से मैच नहीं करता। इफ नॉट मैच विद स्किल्स, अगर ये सैलरी उसकी स्किल से मैच नहीं करती, अगर बिल्कुल मैच नहीं करती तो सारा ऐड हो जाएगा, और अगर पार्शियली मैच नहीं करती तो जितनी अमाउंट अनजस्टिफाइड है वो क्लब हो जाएगा। दूसरा, अगर दोनों स्पाउस सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड हैं तो दोनों के केस में जो भी, और हम ये दोबारा बोलते हैं कि अगर एक एंटिटी में दोनों स्पाउस सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड हैं और दोनों के दोनों उस एंटिटी से रेमुनरेशन ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो सारा का सारा रेमुनरेशन इन टोटल रिसीव्ड बाय बोथ ऑफ द स्पाउसेस will be clubbed and hands in the or taxable in the hands of only that spouse which has the higher income of the two। तो दोनों में से जिसकी इनकम ज्यादा है, दोनों को मिला के जो भी रेमुनरेशन मिला वो सारा का सारा उसी के हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है सर। दूसरा केस इसके अंदर क्या है कि अगर यहाँ एक्स है और यहाँ मिसेज एक्स है, तो यहाँ मिस्टर एक्स है और यहाँ मिसेज एक्स है, और यहाँ ऑन द अबव लाइंस एक्स ने अपनी वाइफ को असेट ट्रांसफर तो किया बट उसके लिए प्रॉपर पैसे नहीं लिए। तो अगर वो असेट का ट्रांसफर विदाउट एडिकेट कंसिडरेशन है तो एक्ट ये मान के चलता है कि ये ट्रांसफर जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि ट्रांसफर तभी वैलिड होगा जब पैसे लिए जाएं। तो इस असेट से अगर किसी भी तरह की इनकम होगी तो इनकम मिसेज एक्स की इस मिस्टर एक्स के हैंड्स में क्लब हो जाएगी। यानी कि सेक्शन 60 में या तो ट्रांसफर हुआ ही नहीं था या ट्रांसफर रिवोकेबल था, क्योंकि वहां वो आपका स्पाउस नहीं था। आज के डेट में लोग इंडिया में स्पाउस के अलावा अपने किसी और को पार्टनर नाम नहीं मानते। ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है कि मकान आप खरीदते हो, पैसे आप देते हो, और जो मकान की ओनरशिप है वो वाइफ के नाम है। और नॉर्मली ये एक्टिविटी सिर्फ स्पाउस के नाम पर ही होती है और किसी के नाम पर नहीं होती, या फिर कभी कभी माइनर चाइल्ड के नाम पर भी होती है। इसलिए एक्ट ने क्या करा, ये आइडेंटिफाई किया कि अगर स्पाउस के अलावा किसी और को आपने असर ट्रांसफर किया, कंसिडरेशन ली या नहीं ली डजंट मेक अ डिफरेंस, उसका जो टैक्सेबिलिटी होगी वो दूसरे प्रोविजन में होगी, लेकिन क्लबिंग नहीं होगा। लेकिन क्योंकि आप स्पाउस के नाम बिना पैसे लिए या कुछ कम पैसे लेके असर ट्रांसफर कर सकते हो, तो जितना भी ये क्लब, जितना भी उस असेट से इनकम होगी वो सारी की सारी उस स्पाउस की इनकम में ऐड हो जाएगी जिसने ये विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन ट्रांसफर। और तीसरे केस में भी पहले की तरह है कि यहीं पर अगर एक्स ने किसी थर्ड पार्टी के नाम ये ट्रांसफर किया विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन और उससे कहा कि इस असेट से होने वाली जो भी इनकम है वो मेरी स्पाउस को दे दो, तो एक्ट ये मानता है कि ये थर्ड पर्सन फिक्टिशियस है, ही हैज बीन जस्ट मेड अ स्केपगोट
to avoid the identity of the spouse, and hence income of that asset which may be either earned in the name of the third person received by Mrs. X, irrespective of those facts, will be taxed only in the hands of the such person who has transferred. And if we take the last topic, that is son's wife, they are similar as the case of the spouse in the last two cases. यानी कि sons के wife में ये entity वाला केस नहीं है, बाकी दोनों केसेस as it is हैं, और इन सब केसेस के अंदर किसी दूसरे बंदे की इनकम को आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा, क्लब कर दिया जाएगा, जो कि आपकी टैक्सेबल इनकम की अवॉर्डेंस को रिमूव कर देगा. And I hope this session was helpful for you. On this note, myself Deepak.